Assalamu alaikum ji. Today we are at the site in Bukhari. Bukhari Commercial Phase 6 DHA Karachi. यहाँ पर Fundermax elevation panels की installation हो रही है. So we thought we'll just stick around, make a short video for you. देखें ये लोग लगाते किस तरह हैं. As you can see, इसके पीछे let me zoom in a bit. इसके पीछे ये चैनल्स की इन्होंने फ्रेमिंग की हुई है. एंड आई सपोज ये वाले पैनल्स जो लगे हुए हैं साइड पे ब्राउन वाले, ये भी इसी तरह इन्होंने इंस्टॉल किए हैं. लेकिन दी सीम टू बी, हाँ, ये थोड़ा सा कट्स में इन्होंने छोटे पैनल्स लगाए हुए हैं और साइड पे दे आर इंस्टॉलिंग लार्जर शीट्स. क्वाइट अ लार्ज साइज़, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि बल्कि आई एम श्योर दिस इज़ नॉट द फुल साइज़. ये भी कट पीस है एक बड़ी शीट का. व्हाट दीज गाइज आर डूइंग राइट नाउ इज़ ये इसका जो स्पेशल सिलिकॉन है वो अप्लाई कर रहे हैं. ग्लूइंग सिस्टम इसका. What you cannot see here is जो एल्युमिनियम चैनल्स पीछे लगे हैं, इसके ऊपर पहले इन्होंने एक प्राइमर कोटिंग की है which is a clear primer. That's why you cannot tell the difference. Now they're applying some double tape and the special bond for to stick the panels on. You can see they're peeling off the protective layer होती है डबल टेप की. Now they're lifting up the panel जो कि उधर फिक्स होना है जहाँ पर उन्होंने डबल टेप और सिलिकॉन अप्लाई किया हुआ है. They have to stay below that line. हैव इट इन प्लेस. और इस वक्त वो स्पेसर्स लगा रहे हैं नीचे वाली शीट के साथ. देयर हैज़ टू बी अ गैप बिटवीन दीज फंडरमैक्स शीट्स. उसका जो गैप है उसके लिए इन्होंने
जिसको उर्दू में कैंडा बोलते हैं, इस पे इसे रख के उसके ऊपर दे आई थिंक दे प्लेस द शीट ऑन एंड नाउ ऑल दे नीड टू डू इज पुश इट टू सिक्योर इट. He's releasing that rope. और मतलब ये कि and all is just pulled in. Nice bike. So now they've hammered this in place. We'll be posting some images of the finished site later on, and we'll also try to make a video with a more precise description of how Fundermax is installed. Pretty nice material. This is in fact the first building in Pakistan, commercial building जिसके ऊपर ये apply हो रहा है. So we are excited about this product. Let's see how this goes from here. Thank you for watching. Bye.